Hello students, I am going to start the topic inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform. Let us define inverse Laplace transform first. If Laplace transform of some function of t is equal to phi of s or f of s, then this f of t, right, is called, then f of t is called the inverse Laplace transform of f of s or phi of s. Clear? So this f of t is called inverse Laplace transform of this phi of s and is denoted by L inverse of phi of s. Clear? So if Laplace of f of t is equal to phi of s, then phi of s is L inverse of f of t. F of t is L inverse of phi of s. So this is the definition of inverse Laplace transform. For example, if Laplace of 1 is 1 by s, then L inverse of 1 by s is 1. Laplace of a is constant, is a by s, then L inverse of a by s is a. One more example. Suppose Laplace of sine at is a upon s square plus a square, then L inverse of a upon s square plus a square is equal to sine of at, and so on. So in this way we will get all standard results of inverse Laplace transform. So they are Laplace transform. In Laplace transform, if I take Laplace transform of some function of t, it will be some function of s, and if you take inverse Laplace transform of this function of s, you will get f of t. So this is a time domain. From time domain to, we are going to transform a function into frequency domain, and again by taking inverse Laplace transform, so from frequency domain to, we will shift to time domain. So this is all about inverse Laplace transform. Let us write some standard results. In one column we will write function, and in another column we will write inverse transform. Suppose function is 1 by s, then L inverse, all the function means phi of s, then L inverse of 1 by s is 1. Suppose the function is 1 upon s minus a, this is phi of s. Inverse of this is e to the power at.
1 upon s plus a. Inverse of this is e to the power minus at. Next is s upon s square minus a square. यहाँ पे s upon s square minus a square. This is cos hyperbolic at. 1 upon s square minus a square. यहाँ पे 1 है न्यूमरेटर में, नीचे निगेटिव है. So 1 by a sin hyperbolic at. Suppose s upon s square plus a square. यहाँ पे प्लस है डिनोमिनेटर में. So this is cos of at. 1 upon s square plus a square. This is 1 by a sin of at. So these are the standard results. L inverse of 1 by s is 1 and so on. Let us continue the list. Here I am writing phi of s. In the second column, L inverse of phi of s. Suppose the next is t raised to n, Laplace of t raised to n, that is 1 upon s raised to n plus 1. 1 upon s raised to n plus 1. Its inverse is t raised to n upon gamma n plus 1. T raised to n upon gamma n plus 1. This is, suppose 1 upon s raised to n plus 1. Then second formula is t raised to n upon n factorial if n is here positive integer. If n is positive integer, you can write it like this, because we know that gamma of n plus 1 is equal to n factorial if n is positive integer. So these are some standard results, are useful results. Let me add one more. Suppose a upon s, then its inverse is simply a. For example, suppose I want Laplace of 1 upon s raised to half. So here, according to the formula, here s raised to half is there, so you have to reduce it by 1. So t raised to half minus 1 divided by gamma half, and this is t raised to minus half divided by gamma half is root pi. So this is the answer of L inverse, sorry, it's not L inverse of 1 by s raised to half. Okay, so these are the standard results. Now हमें इसे by heart करना पड़ेगा. This is the list of standard results of inverse Laplace transform. एक बार quickly revise कर लेते हैं. 1 by s का inverse 1 है. 1 upon s minus a का e to the power at. 1 upon s plus a, यहाँ पे plus रहा तो यहाँ पे e to the power minus at. Minus रहा तो e to the power at. न्यूमरेटर में s रहा, s upon s square minus a square, minus रहा तो cos hyperbolic at. 1 upon s square minus a square रहा, so 1 by a sin hyperbolic at. s upon s square plus a square, डिनोमिनेटर में quadratic factor s square plus a square, ऊपर s है, so cos of at. 1 upon s square plus a square, ऊपर वहां पे 1 है, so 1 by a sin of at. Then 1 upon s raised to n plus 1 है, s raised to n plus 1 is there, so एक reduce करना है t से, t to the power n upon gamma n plus 1. 1 upon s raised to n plus 1, t to the power n upon n factorial, n is equal to 1, 2, 3 and so on. Gamma n plus 1 is equal to n factorial if n is a positive integer. So if n is not a positive integer, we are going to use this. If n is a positive integer, gamma n plus 1 is equal to n factorial. If n is not a positive integer, we know that we can write n into gamma n. Gamma n plus 1 is equal to n into gamma n. So these are important formulae
Let us use these results and we will solve examples. Suppose the question is, just for a revision purpose, question is find the inverse Laplace transform of the following functions. जो भी फॉर्मूले हमने लिखा था उसका रिवीजन करना है. Suppose the question is, I want L inverse of 1 by s plus 2 plus 3 upon 2s plus 5 minus 4 upon 3s minus 2. Suppose this is the question. So here in inverse Laplace transform also linearity property is true, means you can separate these three terms, 1 upon s plus 2 plus constant, you can take it outside, so 3 times L inverse of 1 upon 2s plus 5 minus 4 times L inverse of 1 upon 3s minus 2. So this is equal to L inverse of 1 upon s plus 2, L inverse of 1 upon s plus 2 plus 3 times L inverse of, you can do one thing, you can take 2 here common, so s plus 5 by 2 minus 4 L inverse of, you can take 3 common, s minus 2 by 3. So this will be e to the power minus 2t by using the standard result. L inverse of 1 upon s plus a is equal to e to the power minus 80 plus 3 by 2, this 2 is outside, again using the same result, e to the power minus 5 by 2 into t minus 4 by 3. Just by changing the sign of a, this result, you have to change the sign, e to the power 2 by 3 into t. So this is the answer of this example. So we are revising the list of standard results. Let us see one more example. Suppose example is, I want L inverse of s plus 2 bracket cube whole divided by s raised to 6. L inverse of, in the numerator we can expand the term s plus 2 whole cube, हमें expand करना है by using expansion of a plus b bracket cube, or you can say that by using binomial theorem also. So this is a cube मतलब s cube plus 3 a square b plus 3 a into b square plus b cube. A is s and b is 2 divided by s raised to 6. This is equal to L inverse of s cube, cancel हो रहा है यहाँ पे, so 1 by s cube, 3 to the 6, s square cancel हो रहा है, so 1 by s raised to 4, 4 3 is 12, एक s cancel होगा, so 1 by s raised to 5, and this is 8 by s raised to 6. Now dear student, if you see the numbers, denominator here, s raised to 3, then 4, then 5, then 6, all are positive integers, so we can use the formula number 9, and we can write down the Laplace of this is t, 3 है, so t square by 2 factorial 6 into t cube divided by 3 factorial 12 into t raised to 4 by 4 factorial 8 t raised to 5 by 5 factorial.
So you can simplify this factorial. So it will be t square by 2. 3 factorial is 3 into 2 into 1, which is 6. 6 cancel. T cube. This is 4 into 3 into 2. 4 factorial. 4 into 3 into 2 into 1. So 4 3s are 12. 12 is cancelled. So t raised to 4 divided by 2 plus 8. 5 factorial. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is 120. So you can cancel it. 1 by 15 t raised to 5. Okay, so this is the answer of this question. So in this way, dear student, you can revise the formula. Here we have used the formula e to the power L inverse of 1 by s plus a is e to the power at. Here we have used the formula 1 upon s raised to n plus 1 is equal to t raised to n upon n factorial if n is a positive integer. Right? Let us take few examples. Suppose I want L inverse of s plus 2 whole divided by s square plus 36 plus 4s minus 1 s square plus 25. So again, use the linearity property. You can separate into two terms. L inverse of s plus 2 upon s square plus 36 plus L inverse of 4s minus 1 s square plus 25. Right? So again, see, हमारे पास जो फॉर्मूले का लिस्ट है उसी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. वी हैव दिस फॉर्मूला s upon s square plus a square. This is cos of 80, right? And L inverse of 1 upon s square plus a square is equal to 1 by a sine of 80. So from this term, again two terms you can write. S upon s square plus 36 is 6 square, 2 is constant, 1 upon s square plus 6 square, 4 is constant, s upon s square 25 is 5 square, minus L inverse of 1 upon s square plus 25 is 5 square. So s upon s square plus 6 square, you can use this result. This is cos of 60. 2. You can use this result. A is 6. So 1 by 6 sine of 60 plus 4. You can use this result. So this will be cos of 5t minus, again use this result. This is 1 by 5 sine of 5t. Simplify karo. Cos 60 plus 1 by 3 sine 60 plus 4 times cos 5t minus 1 by 5 sine of 5t. Okay, so here we have practiced these two type of formulae. Next, one more example. Suppose I want L inverse of s upon s square minus 4. Simple, very simple, standard result है. L inverse of s upon s square minus 4 is 2 square. You can compare. In the denominator minus is there, so cos hyperbolic 2t. Very simple example. Next, if we want L inverse of 1 upon s into under root s minus 8 upon under root s,
you can separate it L inverse of 1 upon S. You can use your sum of indices rule. Half under root means half and 1, so half plus 1, right, which is 3 by 2. So S raised to 3 by 2 minus 8 upon S raised to half. So you can use L inverse of 1 upon S raised to 3 by 2 minus 8 into L inverse of 1 upon S raised to half. So this can be written as T raised to 3 by 2 minus 1, which is 1 by 2, divided by gamma 3 by 2, because this is not an integer, minus 8 into T raised to half minus 1, that is minus half divided by gamma half. So under root T, gamma 3 by 2 is 1 by 2 into root pi minus 8 into, here this is root pi, and this will be, you can write 1 upon under root T. So final answer is 2 into under root T by pi minus 8 upon under root pi T. So dear student, just now we have seen how to use standard results to find inverse Laplace transform of the given function. Okay, students, now we will see a method of finding inverse Laplace transform. In the previous video we have seen how to find inverse Laplace transform by using standard results. Now inverse Laplace transform by completing the square. By completing the square, we have to find inverse Laplace transform. Okay, so you know that how to complete the square. That first I will revise it. For example, x square plus 2x plus 3 is there, right? So this I am going to write x square plus 2x plus this 3, I am writing 1 plus 2, bracket मैंने use किया यहाँ पे, because 1 plus 2 is 3. So from first 3 terms it represents x plus 1 bracket square plus 2. So here in this way we have completed the square. Second example, suppose x square plus x plus 1 is there. So for completing the square you have to add 1 by 2 into coefficient of x bracket square, this term you have to add and subtract 1 by 2. Coefficient of x is 1 bracket square, that is 1 by 4. So here we have to write x square plus x plus 1 by 4 plus 1 and minus 1 by 4. So what we have done, here we have added plus 1 by 4 and subtracted minus 1 by 4. Then you can use a bracket for first 3 terms. मिडल का साइन अगर प्लस है तो प्लस वाला टर्म ले लो यहाँ पे, राइट. सो दिस रिप्रेजेंट x प्लस हाफ, ये एक्स स्क्वायर है, इसका पहला टर्म लेना है, और जो लास्ट टर्म है थर्ड टर्म 1/4 है उसका स्क्वायर रूट लेना है, दैट इज 1/2, और ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लो 4 - 1 दैट इज 3/4. तो ये कंप्लीट हो गया स्क्वायर. क्लियर. लेट मी राइट वन मोर. ये x के टर्म में है, लेट अस प्रैक्टिस करते हैं s के टर्म में. सपोज s स्क्वायर -6s प्लस 13 है, राइट. सो इस 13 को कैसे स्प्लिट करना है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ s विच इज -6 ब्रैकेट स्क्वायर.
So this will be 3, right, ब्रैकेट स्क्वायर, सो 9. तो इस 13 को हमें लिखना है एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 एंड यू कैन राइट 13 माइनस 9, मतलब वही हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट 3 टर्म्स, ये फर्स्ट 3 टर्म्स ब्रैकेट में डालो. s यहाँ पे माइनस है, सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे माइनस देना है. s का जो साइन रहेगा वो s का साइन यहाँ पे देना है, और जो थर्ड टर्म है उसका स्क्वायर रूट. सो s माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4. तो हमने 13 को बेसिकली लिखा है 9 प्लस 4, राइट, 9 प्लस 4. तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया. क्लियर? और एक टर्म का प्रैक्टिस करते हैं, then you will come to know. This is very important concept. Okay. So here suppose s square plus 4s plus 29 है. So 1/2 into s का कोएफिशिएंट 4 है, ब्रैकेट स्क्वायर करना है. So this will be 2 square, so 4. तो मुझे लिखना है s square plus 4s plus 4 प्लस 25 प्लस 4 29 हो जाता है, राइट. सो फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा. s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 25 इज दैट, सो यू कैन राइट इट 25. क्लियर स्टूडेंट? अभी आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि इसे कैसे करना है. और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल वाला एग्जाम्पल. Suppose s square plus 2s plus 5 is there. बहुत सिंपल एग्जाम्पल. सो s square plus 2s, 5 को लिखना है 1 plus 4 and first 3 terms s plus 1 bracket square plus 4. Clear? So this is just a practice. Now we are going to use we are going to find inverse Laplace transform by completing the square. Okay, so let me revise the property of which we have studied in Laplace transform. We have the property that if Laplace of some function of t is equal to some phi of s, then Laplace of e to the power at into f of t, shifting theorem, यहाँ पे e to the power at रहा तो phi of s minus a, and we have e to the power minus at into f of t raha, so phi of s plus a, right. So this is we denoted when we have studied also first shifting theorem. अब इसे इनवर्स में कैसे यूज करना है देखो. इफ आई वॉन्ट एल इनवर्स, फर्स्ट फॉर्मूले से मैं लिखता हूं एल इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस माइनस ए, राइट. सो अगर आपके टर्म्स में एस माइनस ए है तो इसका एल इनवर्स ये आने वाला है डेफिनेटली, ई टू द पावर ए टी इंटू एल इनवर्स ऑफ ये जो s माइनस ए है ना उसे लिखना है हमें s e टू द पावर ए टी. एग्जैक्टली रिवर्स करते थे हम, इसमें क्या करते थे s को s माइनस ए करते थे. अभी यहां पे s माइनस ए को हमें s करना है और एल इनवर्स के बाहर e टू द पावर ए टी लिखना है. सो ये तो हमारा पता है, ये तो डेफिनेशन है विच इज f ऑफ t. सेकेंड रिजल्ट को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं. एल इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस प्लस ए है तो e टू द पावर माइनस ए टी एंड एल इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस,
सो e to the power minus at, L inverse of phi of s is f of t होगा, right? So these are the two results from shifting theorem. We are going to use it to find the inverse Laplace transform. Let us solve examples. Suppose the question is find L inverse of s plus 5 upon s square minus 6s plus 13. Right? Suppose I want L inverse of this. So this can be written as L inverse of, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा. सी द डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म है ना, क्वाड्रेटिक टर्म. तो इसका जो ये जो 13 है उसे हमें लिखना है एस स्क्वायर माइनस 6s, यहाँ पे 6 है, डिवाइड बाय 2 करो कितना हो गया 3. 6 को डिवाइड बाय 2 करो 3 हो गया, उसका स्क्वायर कितना हो गया 9. तो 13 को लिखना है 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, राइट. सो L इनवर्स ऑफ ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिला के ये बन जाता है s माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4. क्लियर स्टूडेंट? ये s माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4. यहां पे अगर अभी s माइनस 3 का टर्म हुआ है, मतलब s माइनस a का टर्म अगर कहीं पे भी जनरेट हुआ, क्वाड्रेटिक टर्म में होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद, आइदर s प्लस a होगा या फिर s माइनस a होगा. तो अगर s माइनस a का टर्म हमें यहां पे मिला है विच इज s माइनस 3, तो न्यूमरेटर में भी ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें s माइनस 3 चाहिए यहां पे, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर s माइनस 3. लिखा मैंने, s को लिखा s माइनस 3, मतलब प्लस 3 लिखना पड़ेगा मुझे. प्लस 3 है एंड प्लस 5 है, प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, राइट. देखो प्लस 8 माइनस 3 बन जाएगा 5, यहां पे है. इसे ओपन करो, ये मिलेगा. तो बैलेंस है, दोनों बैलेंस इक्वेशन है. तो नाउ एवरीवेयर s माइनस 3 का टर्म है, हमने एडजस्टमेंट किया s माइनस 3 का टर्म. सो यहाँ पे तो L इनवर्स के जो बाहर होगा, इस इफेक्ट L इनवर्स के इफेक्ट के बाहर e टू द पावर 80 लिखना पड़ेगा. हियर a का वैल्यू 3 है, सो हियर a इज इक्वल टू 3. सो यू कैन राइट e टू द पावर 3t इंटू L इनवर्स ऑफ s प्लस 3 को अभी s करना है, तो s प्लस 8 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. सो e टू द पावर 3t and L inverse of s upon s square plus 4. My dear student, we know that s upon s square plus 4 का cos of 2t plus ये 8 है and 1 upon s square plus 4 का 1 by 2 sin of 2t. So final answer is e to the power 3t cos of 2t plus 4 times sin of 2t, right? So this is the simple example. By completing the square we got the answer of this example. This is very important type. Let us solve next example. Example number 2. Suppose I want L inverse of s plus 1 upon s square plus s plus 1. This is equal to L inverse of. You focus on the terms which are there in the denominator, right? Denominator के जो term है उसके ऊपर हमें focus करना है. न्यूमरेटर में जो एडजस्टमेंट बनेगा डिनोमिनेटर के ऊपर ही डिपेंड रहेगा. तो ये एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 है, तो आप इसे लिख सकते हो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1. कुछ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. देखो एस का कोएफिशिएंट कितना है 1, डिवाइड बाय 2 करो, 1 बाय 2 हो गया, उसका स्क्वायर करो विच इज 1 बाय 4. तो हमें 1 बाय 4 प्लस 1 माइनस 1 बाय 4, मतलब प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, ये एडजस्टमेंट करना पड़ा. इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यही आने वाला है विच इज 1. सो दिस इज इक्वल टू
L inverse of s plus 1 upon, here if you see first three terms, this is s plus half bracket square हो गया, प्लस LCM ले लो यहाँ पे 4 minus 1, this is 3 by 4, right, 3 by 4. सो अभी जो डिनोमिनेटर में एक टर्म फॉर्म हुआ है s प्लस हाफ, तो न्यूमरेटर में भी हमें s प्लस हाफ टर्म हमें बनाना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ, यहां पे बना है s प्लस हाफ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 by 4, न्यूमरेटर में भी हमें s प्लस हाफ प्लस हाफ लिखेंगे हम, ये जो 1 है ना 1, हाफ प्लस हाफ लिखेंगे. सो अभी देखो यहां पे एवरीवेयर s प्लस हाफ टर्म आ गया, मतलब फाई ऑफ, ये जो है ना ये फाई ऑफ s प्लस a वाला सिचुएशन हो गया. तो ये होता है e टू द पावर माइनस at एंड L इनवर्स ऑफ फाई ऑफ s. सो हियर a इज इक्वल टू यहां पे बनेगा माइनस हाफ, a इज इक्वल टू हाफ बनेगा, s प्लस a है ना, s प्लस a, s प्लस हाफ, तो a इज इक्वल टू हाफ बना यहां पे. सो e टू द पावर माइनस हाफ इंटू t, क्योंकि e टू द पावर माइनस at, एंड जो s प्लस a टर्म है या s प्लस हाफ है उसे हमें s लिखना है. सो s प्लस हाफ डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस, ये जो 3 by 4 है ना, उसे √3 by 2 ब्रैकेट स्क्वायर करो, राइट. √3 का स्क्वायर 3 बन जाता है और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4. सो e टू द पावर माइनस t by 2 इंटू L इनवर्स ऑफ s प्लस हाफ डिवाइडेड बाय, इसे सेपरेट कर देते हैं स्टूडेंट, s अपॉन s स्क्वायर प्लस √3 by 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया, प्लस L इनवर्स ऑफ दूसरा टर्म, हाफ कांस्टेंट रहेगा. सो s स्क्वायर प्लस √3 by 2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो e टू द पावर माइनस t by 2, और इसका जो आंसर आने वाला है s अपॉन s स्क्वायर प्लस √3 by 2 ब्रैकेट स्क्वायर का, ये बन जाता है cos, प्लस है ना यहाँ पे, तो √3 by 2 इंटू t, प्लस ये हाफ तो कांस्टेंट है मेरा, एंड L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, इसका फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन ये a √3 by 2 इंटू साइन √3 by 2 इंटू t. So e to the power minus t by 2 cos √3 by 2 into t, यहां पे 2 कैंसिल हुआ, तो 1 by √3 sin of √3 by 2 into t, right? So this is the answer of this example, student. Let me take again one more example of this type. This type is completing the square, right? We are finding inverse Laplace transform by completing the square. 2s minus 1 upon s square plus 4s plus 29. This is equal to L inverse of 2s minus 1 upon, यहां पे मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है. देखो स्टूडेंट, s स्क्वायर प्लस 4s, s का कोएफिशिएंट 2 है, उसको 2 से डिवाइड करो तो बन जाएगा 2, उसका स्क्वायर करो 4, मतलब ये जो टर्म है 29, उसको हमें लिखना है 4 प्लस 25, 29 हो जाता है. सो L इनवर्स ऑफ 2s माइनस 1 अपॉन ये फर्स्ट 3 टर्म्स, इट रिप्रेजेंट s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ओपन करके देखो इसका ब्रैकेट, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 25. अभी डिनोमिनेटर में s प्लस 2 ऐसा टर्म यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो न्यूमरेटर में भी हमें s प्लस 2 ऐसा वाला टर्म फॉर्म करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. जब तक डिनोमिनेटर से क्वाड्रेटिक टर्म से हमें कंफर्म हो जाएगा कि मतलब कैसा वाला टर्म हमें फॉर्म करना है. सो यहाँ पे इफ आई वांट s प्लस 2, सो 2s प्लस 4 लिखता हूं मैं, 2 कॉमन लेंगे तो s प्लस 2 रहेगा, माइनस 4
+4 -4 एडजस्टमेंट है, यहाँ पे -1 है ऑलरेडी। सो एल इनवर्स ऑफ अभी हो गया ये s+2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 25 को लिखता हूं मैं 5 स्क्वायर, और यहां से 2 कॉमन ले लो तो 2 इंटू s+2, तो यह -4 -1 इज -5। दिस इज द एडजस्टमेंट दैट व्हाट वी हैव डन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहां पे किया है। अभी हमें शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है। देखो यहां पे L इनवर्स ऑफ फाई ऑफ s प्लस a रहा, तो e टू द पावर -80 इंटू L इनवर्स ऑफ फाई ऑफ s। इसे कंपेयर करो और a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू है हियर 2, राइट, हियर a का वैल्यू 2 है। सो ये बन जाएगा e टू द पावर -2t इंटू L इनवर्स 2, s प्लस 2 जो है वो s बन जाएगा। सो 2s -5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, यस। सो दिस इज e टू द पावर -2t, सेपरेट कर देते हैं। L इनवर्स 2 कांस्टेंट है मेरा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट है मेरा, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो e टू द पावर -2t इंटू 2, इसका देखो आंसर कितना आता है, ये है cos 5t माइनस 5, इसका आंसर देखो कितना आता है, 5/5 होगा, विच इज साइन ऑफ 5t। तो ये 5 कैंसिल हो गया। सो e टू द पावर -2t 2 cos 5t माइनस साइन ऑफ 5t। तो ये मेरा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। ओके, let us solve one more example. Suppose we want L inverse of s plus 2 upon s square minus 2s plus 17. L inverse of s square minus 2s। s का कोएफिशिएंट देखो, s का कोएफिशिएंट है 2, इसको 2 से डिवाइड करो तो 1 रहेगा, और 1 का स्क्वायर आता है 1, तो ये जो 17 है उसे लिखना है 1 प्लस 16, 16 प्लस 1 17 हो जाता है, राइट। एंड इन द न्यूमरेटर s प्लस 2। सो फर्स्ट 3 टर्म्स L इनवर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन फर्स्ट 3 टर्म्स है s माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16, राइट, क्योंकि ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिला के होता है s माइनस 1 का स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 प्लस 16। सो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक टर्म है वहां पे s माइनस 1 ऐसा टर्म फॉर्म हुआ है, तो न्यूमरेटर में भी हमें s माइनस 1 ऐसा टर्म फॉर्म करना पड़ेगा। फॉर दैट s माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16 नीचे हुआ है फॉर्म, न्यूमरेटर में s -1 कर देते हैं, +1 करेंगे, +1 + 2 3 हो गया, क्योंकि 3 - 1 + 2, राइट, ये एडजस्टमेंट है। तो अभी s -1 आ गया, तो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू 1 है, तो e टू द पावर at, सो 1 इंटू t e टू द पावर t, L इनवर्स ऑफ s माइनस 1 जो है s होगा, सो s प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, राइट। सो दिस इज e टू द पावर t L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3 इंटू L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर t L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, ये बनेगा
cos ऑफ 16 मतलब 4 का स्क्वायर ना, सो cos ऑफ 40 प्लस 3 इंटू, ये साइन में जाने वाला ऊपर 1 है, यहाँ पे 16 मतलब 4 स्क्वायर है और 1 बाय a होता है, तो 1 बाय 4 साइन ऑफ 40. सिंप्लीफाई करो इसे, e टू द पावर t cos ऑफ 40 प्लस 3 बाय 4 साइन ऑफ 40. Right? So this is the answer of this question just by completing the square. Okay, dear student, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आइडिया. सपोज L इनवर्स ऑफ S अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 2 है. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया मैंने. राइट, सो L इनवर्स ऑफ, इसका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाता है s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1. इसे एक्सपैंड करके देखो, ये रहेगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 एंड प्लस 1 दैट इज 2. नीचे s प्लस 1 फॉर्म हुआ है, तो ऊपर भी हमें s प्लस 1 एंड माइनस 1 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो e टू द पावर माइनस t L इनवर्स ऑफ s प्लस 1 s बन जाता है, तो s माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. सो e टू द पावर माइनस t, देन s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 बन जाता है cos t, माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स बन जाता है sin t. तो स्टूडेंट, अगर इसका हम लैप्लास लेंगे तो आपको ये आंसर मिलने वाला है, और इसका अगर हमने इनवर्स लैप्लास लिया तो हमें ये आंसर मिलने वाला है. ओके, सो दिस इज द मेथड known as by completing the square. Thank you.